अस्सलाम वालेकुम। आज मूड उर्दू का भी है और कुछ चटपटे का भी है। मैं उर्द की दाल, इसको भिगो दिया था मैंने 2 घंटे पहले। ये देखें कितनी साफ़ हो गई। ये छिलके वाली दाल थी और उसका मैंने ऐसे आप मल मल के उसके छिलके को उतार दिया है। उतार के जब वो यूँ ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है, तो आप उसको जल्दी से स्ट्रेनर में डाल दें, फिर और पानी डाल के फिर इसी तरह उसको धोएं। और अगर थोड़ा सा छिलका रह भी जाए तो कोई बात नहीं। और फिर मैंने 1.5 कप भिगोया इसको, उड़द की दाल को, और 1 कप माश की दाल को। मैंने ये वाला चाय का कप यूज़ किया था। 1.5 कप उड़द की डाली थी और यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा माश की दाल को भिगो दिया था। 2 घंटे भिगोए रखा है। अब माश की दाल के ऊपर तो छिलका नहीं है, लेकिन जो उड़द की दाल है उसका छिलका जो है वो मैंने उतार दिया। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, फाइबर तो अच्छा होता है डाइट के अंदर। अब हमारी दोनों दालें धुल गई हैं और मैं अब इनको ब्लेंडर में डाल के इनकी पेस्ट बना लूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने दाल का पानी ऐड नहीं किया, मैं अलग से पानी ऐड करूँगी। अब दाल को ब्लेंडर में डाल देती हूँ। In my kitchen here, I cook with whatever mood. My cooking depends on my mood, and also what language I'm speaking depends on my mood. So I was having a very stressful day, stressful morning, had a lot of things to take care of. So I feel like eating desi food, and I also feel like speaking with you today. So that's pretty much what I'm going to do. I soak the lentils and I'm going to grind them, make a paste, and you will hear my Urdu and my English and mix and everything. So yeah, lentils are always healthy. Dals तो हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं. Dal and beans are always good for you. इसके बड़े या दाल की बड़ियाँ बनाएंगे आज. थोड़ा सा मज़ा डालेंगे अंदर स्पाइसेस का, ताकि थोड़ा चटपटा काम हो जाए. 1 कप पानी डाल के स्टार्ट करूँगी. अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और पानी डाल लेंगे. Okay, the lentils are done and they are still a little grainy. I don't want to make a very fine paste because in that case I cannot fry them properly. So you can see it's still a little grainy, right? You see that? Still a little bit grainy. And now I'm going to add some spices to it. मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी दानेदार है. इससे ज़्यादा अच्छी बढ़िया बनेगी. So let's start with 1/4 teaspoon of ajwain seeds, around 1 teaspoon of powdered black pepper, a teaspoonful of salt or according to your own taste, 1 heaping full teaspoon of crushed coriander powder. I made that myself, so I crushed the seeds. Coriander powder is from the seeds. You can always add more, but the minimum I just told you. 1 teaspoon of red chili powder. These are the crushed one that I made at home. You can use paprika, hot chili powder, mild paprika, whatever you feel like. You can add a teaspoon of cumin too, cumin seeds if you like it. But when I use coriander, I don't want to use the cumin seeds at the same time. Okay, mixed it all together. If you think that it's too runny, you can just add like 1/2 cup of besan or all-purpose flour. I'll use some besan if I need it again. अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो पतला है और वो सही नहीं बनेगा, मतलब जो आप बड़ी की शेप देना चाह रहे हैं या बड़े की अगर वो नहीं बनेगी, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मैदा या आधा कप बेसन जो है ना, चंद टेबलस्पूनफुल्स यूज़ कर लें. Last but not least, this is the baking powder, not baking soda, baking powder, 1/4 teaspoon of baking powder, just to make them a little fluffy.
Our mixture is nice and ready to go. It's coming together very nicely, and I'm heating up some oil over here, and then we will fry them. Good thing about those dal dumplings, the bade, they don't absorb too much oil. अब तेल गरम हो रहा है. तेल जो है वो जब गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें मैं वो डम्पलिंग्स या बड़े बना के डाल दूँगी. और दाल के जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा ऑयल जो है उसको जज़ब नहीं करते. I think our oil is ready now because I see the little dumpling in there is making bubbles, so it's ready. We have to fry them on low heat because you don't want the dals to be uncooked from inside and crispy from outside. It has to be cooked properly. There you go. If I'm making barey, the small dumplings, I'm going to keep the size small, but if I want to make bigger ones, then I have to add bigger amount for the dumpling, like this one. And because of that baking soda, they are going to get nice and fluffy. As you can see, they are round, nice and fluffy. So I'm going to let them fry for a while. Look at that, it's nicely making beautiful goldish color. Those are very easy to make. You know, it just takes 15 to 20 minutes for the whole thing. Only time is how long you soak your lentils. So dalon ko, I soak the dals for 2.5 hours. I don't want to soak them for too long because then the paste will not be good. You must cook on slow heat because you have to remember those are raw lentils. कच्चे दाल है, कच्ची दाल जो है उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है. They look nice and brown now. I'm going to take them out and put them in the strainer because I'll be soaking them in a little bit, making another batch of them. When I make those, I make a lot and then I keep them in the freezer until next time I need them. Okay, now I'm going to add my dal vadas to the water. I'm going to soak them for a little bit. Let me add a little bit more water. I will soak them just for a minute or two because I want the excess oil that's clinging to them to come out, and they will absorb some water. That's very good. So जब वो 1 मिनट के बाद मैं उनको पानी में से निकालूंगी और फिर दही में शामिल कर दूंगी उनको. आप इसको दही के साथ खा लें या खट्टे पानी के साथ खा लें, ये तो आपकी मर्ज़ी है. ये वैसे ही खा लें स्नैक के तौर पे. मैं तो ऑलरेडी खा रही हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है. क्रंची भी हैं, मज़े के हैं. ये देखें नाइस एंड सॉफ्ट हो गया, उसने कुछ पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया. I made some yogurt, plain yogurt, and I added some salt and black pepper, cumin seeds, and some dhania, cilantro and mint leaves in it. In goes the vadas. I'm going to let them soak the yogurts, the juices for a while, and let them get comfortable in there for a few minutes. बिस्मिल्लाह, मेरे दही भले तैयार हैं. ये देखें कितने मज़े के बने हैं. चाहे तो ऊपर चाट मसाला डाल के खा लें और खट्टा मसाला डालें जैसे आपका दिल चाहता है. थोड़ा सा ज़ीरा छिड़क लें. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं और बनाने की कोशिश करें, मज़े करें. दही भले देखने में मुश्किल होते हैं, बनाने में बहुत आसान है. और ये दाल वाले बड़े तो बहुत ही मज़े के होते हैं. कोई तोड़ के दिखाते हैं. ये देखिए अंदर से कैसा नरम और स्पंजी सा बना है. चलें जी, मेरे तो मज़े करने का टाइम आ गया. आप भी बना के खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कैसे बने. खुदा हाफ़िज़, बाय बाय.